Good morning, students. Students, as you know that in our previous videos, we discussed a lot about flower. We discussed about the structure of the flower, different parts of the flower, and the relation between different parts or the holes of the flower. Today, I am going to discuss a new concept with you, and this concept of floral formula and floral diagram. So these are the two terms, floral formula or floral diagram. These are very useful while we are going to study about the structure as well as the morphology of a flower. So I will discuss one by one what is floral formula, and I will discuss along with it that what is floral diagram. So I am starting the first one concept, floral formula. Actually, I want to tell you that what is a floral formula. So we have to say that floral formula represents the organization of different holes of the flower, their number, their cohesion means union between the parts of a single whole. Means I mean to say that कि किसी फ्लावर के डिफरेंट जो होल्स हैं, बेसिकली देर आर 4 होल्स, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, आपका गाइनोसियम है और एंट्रोसियम है. यानी अगर मैं कहूँ कि फ्लोरल फार्मूला एक तरह का फार्मूला है, जो फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर के डिफरेंट होल्स कैसे अरेंज हैं और अरेंजमेंट के साथ साथ उनका नंबर क्या है. यानी किसी फ्लावर में कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, ये भी रिप्रेजेंट करेगा. एंड इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट कोहेजन का मतलब है कि जैसे सेपल्स हैं वो आपस में किस तरह से अरेंज हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, या व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स. ठीक है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टामेंस, एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पिस्टल्स. ठीक है, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट कोहेजन एंड इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट एडिशन. एडिशन का मतलब है कि दो अलग अलग होल्स आपस में किस तरह से यूनाइटेड हैं. व्हाट इज़ द यूनियन, क्या पेरियंथ है या पेरियंथ नहीं है, क्या दोनों फ्री हैं या दोनों फ्यूज्ड हैं. ठीक है, तो इन अनदर वर्ड्स वी हैव टू से दैट फ्लोरल फार्मूला इज ए सीरीज ऑफ सिम्बल्स. ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ फ्लावर. तो यानी कि व्हाट इज़ फ्लोरल फार्मूला. तो फ्लोरल फार्मूला इज़ अ काइंड ऑफ फार्मूला in which different symbols are used, and these symbols are representing or they are showing certain specific feature of flower. Or in another words we can say that floral formula is a formulated form, ठीक है, which represents the organization of different holes of the flower. Means it shows the number of different holes, it shows the cohesion of different holes, it shows adhesion of between different holes. Or another words we can say that floral formula is a series of symbols, ठीक है, which represents the specific feature of flower. So what are the different symbols which are used while we are going to describe the structure of flower in a formula form. So I am going to show you. Here you are observing there is a circle, and in between the circle you are observing the sign of plus is there. It shows actinomorphic flower. You know very well that what is the meaning of actinomorphic flower. ठीक है, so and percentage symbol you are observing here. Percentage symbol means the flower is zygomorphic. Actinomorphic and zygomorphic are two different kinds of symmetry. Actinomorphic means radial symmetry, while zygomorphic means bilateral symmetry. If you can cut flower into two equal planes or two equal halves by more than two planes, then it's actinomorphic, while percentage zygomorphic means you can cut a flower into two equal parts by a single plane. ठीक है, similarly if you have to write the sex of the flower, so you can use symbol. A circle with arrow represents the male flower, a circle with plus represents the female flower. If a circle is there and at the above corner of the circle arrow sign is there, and at the lower corner of the circle plus sign is there, it means a flower is bisexual. Some other symbols you can observe here. K is used for क्लेक्स, बेटा डोंट बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि क्लेक्स भी सी से आता है, कोरोला भी सी से आता है. तो क्लेक्स के लिए के यूज़ वर्ड करते हैं और कोरोला के लिए सी वर्ड यूज़ करते हैं. ए इज़ यूज फॉर एंड्रोसियम एंड जी इज़ यूज फॉर गाइनोसियम. तो मेन 4 होल्स हैं, तो 4 होल्स के लिए बेसिकली के इज़ यूज फॉर क्लेक्स, सी इज़ यूज फॉर कोरोला, ए इज़ यूज फॉर एंड्रोसियम एंड जी इज़ यूज फॉर गाइनोसियम. ठीक है,
Now there are some other symbols. If Br is written in front of any formula, so it means the flower is bracted. If EBR is written here, so it means E bracted. K for calyx, C for corolla, P for perianth. You know very well that what is perianth. When the sepals and petals are fused together, then the structure is called as perianth. A is for androecium, G is for gynoecium. If if G is written and below the G there is a line, it means the ovary is superior. If G is written there and the line is above the G, then it means ovary is inferior. ठीक है. So these are the some symbols through which we can explain the complete structure of the flower. ठीक है. Now the next and the last thing, floral diagram. Along with it floral formula. Floral diagram is self explanatory, यानी अगर आप floral diagram पढ़ लेंगे तो आप सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं. I am going to tell you that what is a floral diagram. ठीक है. I have to say that floral diagram is the ground plan of a flower which provides information about the number of the parts of the flower, or I mean to say that it also tells the number of parts of a different whole, means there are how many sepals, there are how many petals. It also tells us about the general structure and arrangement of the different parts of the flower. It also shows cohesion and adhesion. Cohesion, you know very well that union between the parts of the whole, while adhesion means cohesion means as you know that cohesion means union between the parts of the wholes, while cohesion means union between the parts of the different holes. तो यानी किसी सिंगल होल के पार्ट किस तरह से आपस में, सिंगल होल का मतलब आई मीन टू से दैट सेपल किस तरह से आपस में अरेंज हैं या पेटल्स आपस में किस तरह से अरेंज हैं. वहीं आपका एडेशन शो करेगा यूनियन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट होल्स, यानी कि दो अलग अलग, यानी सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के रिलेशन में किस तरह से अरेंज हैं. ठीक है. सो what is floral diagram? Floral diagram is a ground plan of flower which provides information about the number of parts in different holes of a flower and their general structure, their arrangement, their relation with one another. ठीक है. And it also tells us about what is the location of the different holes of the flower with respect to the mother axis. What is mother axis? Here you can observe the floral diagram. You are observing a big dot at the top. This dot is showing मदर एक्सिस. तो मदर एक्सिस के रेस्पेक्ट में बाकी जो फ्लोरल होल्स हैं इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन क्या है, ये भी ये एक्सप्लेन करता है. ठीक है. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लोरल डायग्राम एंड व्हाट इज़ फ्लोरल फॉर्मूला. सो लेटर ऑन आई विल explain. Here you can see that there is a diagram and the diagram is representing the floral diagram of family Brassiaceae. ठीक है. ब्रेसिएसी एक फैमिली है, मस्टर्ड जो फ्लावर है उसकी ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू कैन ऑब्जर्व हेयर. इनिशियली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. हेयर इन द डायग्राम यू कैन काउंट डाउन दैट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 1 2 3 and 4. 4 sepals are there. Along with the 4 sepals you are observing 4 petals are also here, and with the help of the floral diagram you can find out that which kind of estivation is there. In sepals you are observing imbricate type of estivation, while in petals you are observing the very first one, valvate type of estivation is there. Now you can count down there are 6 and stamens. 4 are of similar size and 2 are of different size. ठीक है. एंड ओवरी इज bilocular. देयर आर 2 locules and each locules have 2 ovules. ठीक है. एंड with the help of the floral diagram you can say that plus sign is there in between circle. It means the flower is actinomorphic. It's a bisexual flower. Calyx 2 plus 2. Calyx means you can say see here calyx means it has 4 sepals and they are arranged in pattern of 2 plus 2. 2 are of different types, 2 are of different types. Corolla are 4, androecium are 6. 2 plus 4, 2 are of similar size, 4 are of similar size. Gynoecium are 2 and they are in bracket. It means bracket means there are 2 gynoecium and both are fused and the ovary is superior ovary. ठीक है. So I think today you are able to understand what is floral diagram and what is floral formula. Tomorrow in my next video I will explain
फैमिली विद द हेल्प ऑफ द फ्लोरल फार्मूला और फॉर फ्लोरल डायग्राम। सो आई होप सो कि आज आपको आ गया होगा जो मैंने समझाया। इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी तो बेटा यू कैन कंसर्न विद मी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।